Hi guys, this is Tarot Genie. Welcome to the channel and thank you so much for joining me. And this is a explanation video. तो इस वीडियो में मैं कुछ explain भी करूंगी और कुछ कोशिश करूंगी English translation भी करने का पहले वाले कुछ readings के लिए. I have some little time, so I thought, okay, let me do this for you. तो ये वाला कार्ड आप देख रहे होंगे मेरे सामने में है. ये जो शॉट्स मैंने क्रिएट किया था सुम्बुल और फहमान के गाइडेंसेस स्पिरिट गाइड्स से, ये कुछ लोगों को समझ नहीं आया है, काफ़ी लोगों ने देखा नहीं है क्या चीज़ है, ये समझ नहीं आया है शायद आप लोगों को. तो आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू. ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग था. आई थॉट दैट यू वुड रियली लव दीज वन शॉट guidances, you know, that power guidance from spirit guides, but I don't know why you couldn't understand, whether you didn't understand this or what happened. I have no idea. You remember this was the card that we got for Sumbul in her personality reading, okay, where she is this warrior and she fights even with her one leg, with only strength in one of her legs. She kind of fights. Okay, so quite a fighter at that, Sumbul. तो what am I going to do in this video is कि ये जो शॉर्ट्स जो मैंने बनाया था, जहाँ पे बेसिकली मैंने स्पिरिट गाइड से एक क्वेश्चन पूछा था और एक कार्ड में उनसे आंसर लिया था. सटीक, टू द पॉइंट, हिटिंग द बुल्स आई आंसर. ठीक है, यहाँ पे कोई भी मैनिपुलेशन की गुंजाइश नहीं रहती, यहाँ पे कोई भी ईगो से कार्ड को पढ़ने का कोई गुंजाइश नहीं रहता. क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं ना कि आप इसको विलन बना रहे हो, उसको आप हीरो बना रहे हो, राइट. इवन दो आई डू टेस्ट माई गाइडेंसेज एट वेरियस लेवल्स, बट स्टिल. So, but I'm not really explaining this or did this videos for this purpose to answer such, answer that confusion or these allegations, because some people will always have some issues or the other and that is fine. But क्योंकि जब मैंने देखा कि जब शॉर्ट्स बनाने के पहले वाला जो वीडियो मैंने डाला था वहाँ पे काफ़ी confusion था. I saw that there confusion था या फिर काफ़ी बातचीत थी where people were like, telling Sumbul should do this, Fahmaan should do that, throwing these opinions, and everybody has an opinion and they think from their perspective. तो मुझे लगा कि yes, I see that there are a lot of people who वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे हैं, एक दूसरे पे कमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे पे सरकाज़म थ्रो कर रहे हैं, and everybody has a opinion for their favorite couple. Sumbul and Fahmaan, and I was like, I always of course do things from a detached point of view. I don't really get into things. So मेरे लिए जैसे Sumbul जैसे Fahmaan वैसे ही उसके पिताजी भी, all three all equal, because everybody is going through their own healing journey. Everybody is here to learn something, heal something, let go something, grow in understanding and become more non-judgmental. इसीलिए आप यहाँ पे हैं. तो मैंने सोचा कि ये सब तो डेफिनेटली जो गाइडेंस, जो आप आंसर्स दे रहे हो कि सुम्बुल को ये करना चाहिए, फहमान को ये करना चाहिए, तो ये तो डेफिनेटली आपका प्रेफरेंस है, आपके ओपिनियंस है, ये आपके इट कम्स फ्रॉम योर अटैचमेंट. अगर कोई सुम्बुल का फ़ैन है तो सुम्बुल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गाइडेंस या ओपिनियन उसका रहेगा. फहमान के जो फैंस हैं फहमान की तरफ से गाइडेंस देंगे, है ना. बट व्हेन वी आस्क गाइडेंस फ्रॉम आवर स्पिरिट गाइड्स जब गाइडेंस देते हैं तो दे गिव इट फ्रॉम हियर, दे डोंट गिव इट फ्रॉम हियर, दे सी थिंग्स फ्रॉम हियर एंड दे गिव द गाइडेंस. वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब देख रहे हैं स्पिरिट गाइड्स. आपका पास्ट लाइफ्स भी देख रहे हैं स्पिरिट गाइड्स, आपका प्रेजेंट सोल प्लान भी देख रहे हैं कि क्या आप इस लाइफ में सीखने के लिए आए हैं, क्या चैलेंज लेके आए हैं, एंड ही गाइड्स यू थ्रू ऑल दैट. तो किसी ने बोला था कि क्या ये माइंड रीडिंग है, क्या ये माइंड रीडिंग से भी बहुत हाई फाई चीज़ है. यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस, हम हायर बींग्स से गाइडेंस ले रहे हैं जो कि हमारा पास्ट लाइव्स ये वो हर चीज़ जानते हैं. तो ये बोलोगे ये सब बेकार की बात है, तो अगर बेकार की बात है तो आपको यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए. बहुत सिंपल सी बात है. ओके, तो व्हाट वर वी टॉकिंग कि हाँ, तो मैंने सोचा कि जब इतना सारा एडवाइस है, हर चीज़ है, तो व्हाई नॉट टेक अ गाइडेंस फ्रॉम स्पिरिट गाइड्स
himself, spirit guides themselves, जो कि एक कार्ड में हमको बता देंगे कि सुम्बुल को क्या करना सही रहेगा. एंड दिस विल नॉट बी फ्रॉम सुम्बुल्स साइड और फहमान साइड, दिस विल बी फॉर सुम्बुल्स. अगर सुम्बुल का गाइडेंस लेते हैं, दिस इज फॉर सुम्बुल्स हाईएस्ट गुड. इफ फहमान का लेते हैं तो दिस इज फॉर फहमान्स हाईएस्ट गुड. ये चीज़ होती है. तो वहाँ से स्पिरिट गाइड्स किसी को भी ना ऊपर और नीचे नहीं करते हैं. जैसे कि हमारा फेवरेट होता है ना, हमारा ये फेवरेट है, हमारा वो फेवरेट है, तो हम उसको थोड़ा सा ब्राउनी पॉइंट्स ना चाहते हुए भी दे ही देते हैं. बट स्पिरिट गाइड्स विल नेवर डू दैट. तो इसीलिए मैंने ये सोचा था, इसीलिए मैंने ये शॉर्ट्स क्रिएट किया था जहाँ पे मैंने कार्ड्स पिक किए थे कि सुम्बुल का एडवाइस इस सिचुएशन में क्या है, सुम्बुल का एडवाइस उस सिचुएशन में क्या है, फहमान का एडवाइस इस सिचुएशन में क्या है, इसके लिए क्या है. एंड वी गॉट जस्ट वन आंसर. एंड वहाँ पे जो वन आंसर हमें वन कार्ड से मिला है, वन कार्ड आंसर मिला है, इट इज़ सो spot on. It is hitting the bullseye. If you see, this is what I'm going to explain you in this video. तो पहले तो मैं सारा कार्ड्स निकाल देती हूँ. ये वाला भी आया था. What other cards we got? Have you checked out the shots? You guys have not checked out the shots. It is pretty much very self-explanatory, guys. ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये भी आया था. So I think that's all that we got, right? Yeah, इतने ही थे. Oh, ये भी था. And I think this one was also there, if I'm not wrong. Yeah, so these all cards were there. So let me explain these one-shot messages that we got from spirit guides for Sumbul Fahman's, for Sumbul and Fahman for their different aspect. Do you get me? Okay. So first, this was the first guidance that I had done. And this was, actually, yes, everybody has an opinion कि सुम्बुल को, अगर सुम्बुल अपने पिताजी का केयर कर रही है, उनको सपोर्ट करती है फाइनेंशियली, हर चीज़ कर रही है, तो इसमें बुरा क्या है? एक्चुअली इसमें कुछ भी बुरा नहीं है. Kids should support their parents and should take care of their parents, because our parents have also taken care of that. What is really bad in that? Perfectly all right. And some people in the same time believe that Sumbul should do her own thing. She should stop. I don't think they mean to not support. I don't think they want Sumbul not to support her father, but they are more like Sumbul should take her own decisions, something like that. So these are the two opinions, two popular opinions about Sumbul and father when it comes to both of them. Spirit guides answer for, or rather advice. One card, no bullshit, no beating around the bush advice for Sumbul when her father comes to picture is this. If you have not seen the shots, so if you might wonder that where have I taken this card from? So I have taken this card from shots where I had actually pulled the card in front of you. If you have not checked the shots, then please go and check the shots. So this is Spirit Guides guidance on Sumbul, for Sumbul on her father. And I was really taken back by this, very blunt answer by the Spirit Guides, because I have never seen Spirit Guides being so blunt. Probably very rare, in very rare situations I have seen Spirit Guides, really calling it out and being so direct and to the point, and like literally being this badass queen of sword. Like, no cutting the crap, this is what you need to do. So when I asked the Spirit Guides, what are your thoughts, or what are your advice for Sumbul, for her father? And this is what we got. This is a tree, and the card says, let them go. If you see here, you can make out this is a lady who is sitting here, and here the tree is kind of really burning. Or rather, you can say that the tree has caught fire, and there is no way probably you will be able to save this tree. So here is this one person kind of sitting in front of the tree. Really looks like this person was really in love with the tree and is really sorry that this tree is kind of catching fire and she will not be able to save the tree. But the reality is this, that all the branches of this tree are on fire, and it will not be really possible to kind of really put this fire off, and therefore the guidance, let them go. Okay, I will also read out the message from the
guidebook so that you have a little clarity more. So this is the guidance that spirit guides are giving to Sumbul for her father. And I do know that this is very direct, blunt answer, but let's see what it really says here. Let's read this out. You often take on the pain of others. Okay, so she is always taking on the pain of her father, as we understand. You used to think it was because you are an empath, but these days you are not so sure. Sometimes it feels like other people are emptying their emotions into you and giving nothing in return. Giving nothing in return. Guys, this is the guidance that spirit guides have given to Sumbul when we asked about how to, what should Sumbul do? You know, she's in her relationship with her father. And this is what is all coming in. Sometimes we even feel we have inherited pain from those who come before us in our family tree. This is your permission to let go. Your life is ultimately about not what other people expect you to carry for them. This is so spot on, kind of really stamping all the divine guidances that we have got on the girl so far over various readings. इतने सारी रीडिंग्स जो हमने सुम्बुल पे की है, ये एक कार्ड और ये एक पैराग्राफ, इट नेल्स एंड स्टैम्प्स दैट की जो भी हमने फाइंड किया है थ्रू ऑल द कनेक्शंस एंड ऑल द लेंदी रीडिंग्स, इट ब्रिंग्स एवरीथिंग इन नटशेल. ओके, so यहाँ पे क्या है? So you have already understood you have read this thing in English. You can just see if you want to. Okay, all right. तो यहाँ पे basically क्या बोला जा रहा है कि you know I've already explained in English. Now I'm going to explain in Hindi. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे तो ये पेड़ है, ये आप समझ सकते हैं कि who is she, और यहाँ पे एक पेड़ जल रहा है जो कि जल रहा है और इस पेड़ को बुझाया नहीं जा सकता है. एज इन इस पेड़ में जो आग लग गई है, सारे ब्रांचेस में जो आग लग गई है, इसको बुझाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि आसपास यहाँ पे कुछ बुझाने के लिए है भी नहीं, और ये पूरे के पूरे ब्रांचेस में आग लग गए हैं जो कि अब ये ऐसा ही जलता ही रहेगा. और यहाँ पे मैसेज है लेट देम गो. अब यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, सुनिए. यू ऑफन टेक द पेन ऑफ अदर्स, यानी कि तुम हमेशा दूसरों का पेन अपने पे ले लेती हो. यू यूज टू थिंक इट वॉज बिकॉज यू आर एन एम्पैथ, तुमको लगता था कि यस यू आर अ वेरी इमोशनल पर्सन, इसीलिए तुम दूसरों का दुख दर्द फील करती हो. एंड इट इज ओके टू फील द दुख एंड दर्द ऑफ अदर पीपल. ठीक है, but these days you are not sure. Sometimes it feels like other people are emptying their emotions into you and giving nothing in return. अब ये बात को समझिए. यस वो दूसरों का, ये जो लड़की है ये दूसरों का दुख ले लेती थी. अब फादर के सिलसिले में ये बात हो रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा. तो ये दूसरों का दुख अपना ही समझती थी, अपने पिताजी का दुख ये अपना ही समझती थी, और उसको लगता था कि या इट्स फाइन, अगर मैं उनकी बेटी हूं तो उनका दुख और कौन समझेगा. लेकिन आजकल एक फीलिंग जो है ये थोड़ी सी बदल सी गई है. किस तरफ से बदली है? बदली यहाँ पे ये है कि आजकल ऐसा लगता है कि यू आर नॉट श्योर कि ये सच में मैं ये फीलिंग, आई मीन you are not sure about this. Sometimes it feels like other people are emptying their emotions into you and giving nothing in return. आजकल ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं, आजकल ऐसा हो गया ना कि ये चीज़ उल्टा हो गया है, ये चीज़ यू टर्न ले लिया है इस चीज़ ने, और ऐसा लग रहा है कि आजकल ये जो, अब हम इस कार्ड में, इस गाइडेंस में उसके पिताजी की बात कर रहे हैं, तो ये पिताजी का गाइडेंस है तो हम पिताजी का ही नाम लेंगे, कि आजकल ऐसा लग रहा है कि वो ये जो है, ये जो इंसान है, ये जानबूझ के अपना दुख दर्द मेरे पे काइंड ऑफ एम्प्टी कर रहे हैं. एम्प्टिंग देयर इमोशंस इनटू यू एंड गिविंग नथिंग इन रिटर्न. और बदले में मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा. यानी कि अगर ये उनका केयर करती है तो ये भी तो कुछ एक्सपेक्ट करती होगी कि उसको भी तो कुछ केयर मिले. लेकिन मैंने कि ऐसा होता है ना कि जैसे कि हम केयर करना स्टार्ट किए हैं तो बस अब हम ही देते जा रहे हैं, हम ही देते जा रहे हैं, हम ही अंडरस्टैंडिंग बन रहे हैं, और उधर से और भी अगर कुछ आ भी रहा है तो और नीड आ रहा है, नीडीनेस आ रहा है कि हाँ मुझे और दो, मुझे और नीड चाहिए, मैं बेचारा हूँ, समथिंग लाइक दैट. All right, so sometimes we feel we have inherited pain, we have inherited pain from those who come before us in our family tree. बिल्कुल.
Do you remember the guidance that we did for her mother, जहाँ पे she went through all this pain and all these things? अब क्या हो गया है कि वो तो निकल गई हैं, she has found her own peace and everything, but what this card is telling is कि वो जो पेन था, वो जैसे ऐसा लग रहा है ना कि ये इनहेरिट हो गया है, जैसे कि उनकी वो जो माता जी उनकी चली गई तो ये पेन इसको देके चली गई हैं, या फिर वो इनहेरिट हो गया है फैमिली ट्री में, और फैमिली ट्री का बात हो रहा है। और हमने माता जी का रीडिंग ऑलरेडी किया है और हमने देखा है कि शी वेंट थ्रू द सेम सिचुएशन, द गर्ल इज गोइंग थ्रू द सेम सिचुएशन, दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, फैमिली ट्री। सो डू यू सी हाउ दीज थिंग्स आर कनेक्टिंग? All right, so this is very transparent, guys. This is as transparent as it possibly can. So you cannot really blame anybody that yes आप इसको victim कर रहे हो, इसको villain बना रहे हो, ऐसा कोई बात नहीं है. It is what it is. Nothing in return. Sometimes we even feel we have inherited pain from those who come before us in the family tree, यानी कि उनकी माता जी का दुख और दर्द है, as if कि वो pass on हो गया है, वो inherit कर ली है. This is your permission to let go. Your life is ultimately about you. Your life is ultimately about you. Okay? So don't make your life, be loving to your father, be kind to your father, be loving to your family members, everybody. But you know what? You cannot make your life about them. Your life is ultimately about you, not what other people expect you to carry for them. And how correct is that? So this girl is basically making all her life about, carrying the dreams of her father, which is not right. It is 200% 200% right for the daughter to care for her father, mother, family, brother, sister and all that. But now what she is feeling, अब उसको खुद ही समझ में आ रहा है कि यार ये तो सही नहीं है. पहले तो मैं खुद से केयर करती थी, पर अब ऐसा लग रहा है कि मेरे पे ये सब चीज़ एक नीडीनेस जो है मुझ पे लादा जा रहा है. एंड मैं जितना ही कर रही हूँ मुझ पे उतना ही ये नीडीनेस काइंड ऑफ बीइंग पुट ऑन टू मी. राइट, सो दिस इज व्हाट इट इज. So this is what her guidance is. Live your life. Your life is about you, not other people, what they expect to carry for them. तो ये गाइडेंस है, यानी कि बेसिकली अगर सुम्बुल और उसके पिताजी का गाइडेंस हम बोले तो सुम्बुल जो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर उनका जो ड्रीम जी रही है, she has to stop carrying the dream of her father on her shoulder. She is not being asked to let go her father. She is not being asked ki don't support your father. She is not being asked that you don't love your father, support your father, be possessive about your father. But yes, don't make your all life about carrying the dreams of your father on your shoulder, because you are feeling the burnt now. यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है यू आर फीलिंग द बर्न्ड, क्योंकि पहले तो तुम केयर करती थी, तुमको लगता था कि यस यू आर एम्पैथ, यू लव इट, बट यू आर नाउ फीलिंग द बर्न्ड. और ये चीज़ तो हमने बार बार देखा ही है कि अंदर में शी फील्स शी हैज़ दिस नीड टू बी फ्री, एंड देयरफॉर दिस वन कार्ड नेल्स ऑल हर गाइडेंसेस जो कि हमने अभी तक सब किया है. सो आई होप दिस गेट्स यू गेट इट गाइड्स. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट गाइडेंस. Let's do the guidance for Fahmaan. When we asked, dear spirit guides, please tell us what is Sumbul's ideal guidance, or rather what is spirit guides guidance for Sumbul when it comes to Fahmaan. Fahmaan के संदर्भ में सुम्बुल को क्या करना सही रहेगा, और यहाँ पे उसका गाइडेंस है. Princess, you carry your own night. You can be your own knight. Now, what does this really mean? This means that, dear Sumbul, you know what? You are more stronger. So we have always seen that Sumbul, for her, some kind of, emotional support, or for some kind of understanding, which probably she is not getting from people she lives with. And for that reason, she kind of looks for this kind of support, understanding, from outside, and we know that this person is Fahmaan, right? And she kind of depends on Fahmaan for some kind of support, emotional support,
understanding. But spirit guides don't want her to carry the burden of her father's dream, but spirit guides also don't want her to depend on Fahmaan too much. Spirit guides want her to stand on her own feet and fight her own battles, because she is powerful enough to fight her own battles. And now do you see that how beautiful this reading becomes? Because here spirit guides are not telling, as कुछ लोग बोलते हैं कि फहमान को हम हीरो बनाते हैं और किसी को हम विलन बनाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. स्पिरिट गाइड्स का गाइडेंस सुम्बुल के लिए यही है कि ना तो आप sacrifice your life for your father, neither do you have to depend on Fahmaan for all your emotional needs. You don't need Fahmaan to fight your battles. जो Fahmaan उसके लिए battle fight करता है ना उसके पिताजी से, literally he waged a war with that interview. So she doesn't has to do that. She is very powerful, and we already know that she is a dragon here in the very first reading that we did for her personality. So spirit guides here are advising her that, see girl, you don't have to depend on Fahmaan for your emotional needs to fight your battles. You are strong enough to fight your own battles. So believe in yourself that you can fight your battles. If you want to say no to anybody, you can say no. You don't have to, depend on Fahmaan to fight your battles. So basically, we see that Fahmaan is always fighting Sumbul's battle. Ki no, interview mein he literally fought a battle for Sumbul actually, right? Where he said, I don't know, I have not seen the interviews, but yeah, this guy keeps on feeling for Sumbul and, feeling too much for her, is very protective about Sumbul. And the spirit guides are telling that, hey girl, you are the princess, you are the warrior. You know what? This reading is again beautifully tying with the previous reading, jahan pe we had got this, I think it was Sumbul's personality read, where at the subconscious level, no, not at the subconscious, at the subconscious level, there was a need of this partnership. Now you remember why we keep telling there is a need of a partnership, there is a need of a partnership. आपको याद आ रहा है कि हमने काफ़ी बार, जब से हमें पता चला है तब से हमने ये बात काफ़ी बार रिपीट किया है कि she needs, ऐसा लगता है कि she needs a partnership who can stand with her, understand with her. और यहाँ पे ये कार्ड आके यही बता रहा है, and this card is for Fahmaan. So Fahmaan actually understands her. Fahmaan actually fights her battle. Fahmaan fights battles for her. And she is like, princess. And princes are seen as very delicate, very vulnerable, waiting for the Prince Charming to come to fall on their knees and get married and propose and all that. But here it is like, she's carrying this sword here. And the spirit guides are telling that you don't have to wait for Fahmaan, the knight, to fight your battles. You are strong enough to fight your own battles. Even if it is against your own father, by telling him no. Because here her father is becoming way too dependent on her for everything, and she is feeling the burnt, as you saw in the guidebook. So this is what it is. So there is this innate need in her at the moment where she kind of depends on Fahmaan, because this is Fahmaan ka card. We have got when we have asked to fight her battles. So she has to fight her battles, Fahmaan. And it is very understanding कि अगर Fahmaan-Sumbul की तरफ से बोलेगा तो people will question, why are you saying it if she doesn't has a problem, and if she has a problem she will definitely tell, so why are you being the knight? और इसीलिए स्पिरिट गाइड्स ने सुम्बुल को बोला है कि तुम अपने बैटल्स खुद लड़ो. यू आर द नाइट, यू आर द वॉरियर, तुम फाइट कर सकती हो. एंड व्हेन सुम्बुल विल से नो, then it will be more accepting. People will say, okay, fine, she is the daughter, she is telling. या फिर not only in case of father, in other cases as well, she need to take her own decisions, she needs to fight her own battle. Because if somebody else is fighting in the battle, and in this case Fahmaan, because this is Fahmaan's card itself,
then of course he will be questioned. Why are you fighting battle for the princess? But yeah, here the princess is asking the knight, not literally asking, but definitely kind of expecting, not really asking, but expecting somehow that, he understands, because she looks forward to him to understand her. She knows that this guy understands her and will protect her, and will fight for her, and will stand with her and second her and all that things. So this is what it is. सो बेसिकली इस कार्ड से, क्योंकि फहमान के रीडिंग में आया है कि फहमान के साथ कैसे इसको अपने रिलेशनशिप हैंडल करना चाहिए, तो फहमान की तरफ डिपेंड करना इसको बंद करना पड़ेगा. स्टॉप लुकिंग टू फहमान टू कम एंड सेव हर एज अ नाइट एंड फाइट हर ओन थिंग्स. तो वो चीज़ें हैं. तो यहाँ से फिर से एक बार कंफर्म हो गया है, क्योंकि ये फहमान का कार्ड है, कि फहमान इज द नाइट इन हर लाइफ, ऑलवेज फाइटिंग फॉर हर, जो कि हमें रीडिंग से भी बार बार पता चला है. ओके, सो पिताजी के साथ क्या गाइडेंस आया है? लेट देम गो. जो भी तुम्हारा एक्सपेक्टेशंस तुम्हारे पिताजी तुम पे डालते हैं, जो कि तुमको खुद अब भारी लगने लगा है, यू फील दैट यू आर बर्निंग हिज एक्सपेक्टेशंस, आर बर्निंग यू, एंड यू आर लाइक, वो तुमसे कुछ लेते रहते हैं, बट तुमको बदले में कुछ नहीं मिलता है. दे आर मेकिंग यू रियली एम्प्टी एंड हॉलो. So yes, you have to stop doing that. And who will stop doing this? You yourself have to stop this, because stop, depending on others to fight your battles, especially Fahmaan यहाँ पे. Fahmaan should not fight your battles, because, and that is what it is. Okay, so we get that. When we asked about Sumbul's career, okay, dear angels, dear spirit guides, what are your guidance for Sumbul for her career? And this is the beautiful answer that we have got for Sumbul for her career, and this is so apt once again. This is Tower card, where she has done this Shirsha Asan, basically a hanged man position, and she is unplug, relax for a spell. Tower का कार्ड है. क्या ये बोलना चाह रहा है? Did we read the card number 1? Let's read the card number 1 for a better clarity. You can be your own knight. You may be in the dire situation you need escaping from. Okay, she is in some kind of situation where she needs to escape. And we know already that here she is feeling that, somebody is depending so much on her, even though she has been very understanding to this person. Now this person is kind of, being so dependent on her for everything that she feels hollow, because she is not getting anything in return for what she is giving to this person. So she feels hollow, and she definitely needs to escape this situation. And here comes the second card, which is again falling one after the other beautifully, explaining one situation with one person, nicely following and explaining the another situation with another person. They are all falling in tandem है. यहाँ पे कोई ऐसा rough edges नहीं है कि ये कार्ड का सेंस बनता है पर इस कार्ड का सेंस नहीं बनता है. एक चीज यहाँ से दूसरे में ब्यूटीफुली कन्वे होके ऐसे फोल्ड्स में जा रही है. स्टोरीज है. तो फिर चलो देखते हैं यहाँ पे क्या है. तो कोई सिचुएशन है जिससे सुम्बुल को एस्केप करना है. यू मे बी इन अ डायर सिचुएशन, यू नीड टू एस्केप फ्रॉम समथिंग. यहाँ से उसको किसी चीज से एस्केप करना है. You have the power within to persevere. You already know you don't need to be rescued by a charming prince or a chivalrous knight in shining armor. तो आप समझ गए हो ना, क्योंकि ये वाला कार्ड हमें फाहमान के लिए आया है, और ये क्या बोल रहा है कि तुमको फाहमान पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है किसी चीज से तुमको बचाने के लिए. तुम खुद बहुत पावरफुल हो. यू कैन डिपेंड अपॉन योर सेल्फ. और हम हमेशा देखते हैं, एक तो फाहमान ने वो इंटरव्यू दे के ही kind of really fought for Sumbul. Plus, yes, this is actually right. Sumbul के लिए फहमान हमेशा फाइट करता रहता है. एक maybe it is not a open SOS, but Fahmaan knows that yes, she depends on me and I have to fight for her, princess and all that. And guides, spirit guides are telling, don't depend on Fahmaan to fight your battles. Fight your own battles. Okay, fight your own battles. You have got your own shield and sword. Yes, she has got her shield, but she is not using it. ये shield को use करके she has to tell no to someone here.
Okay, so you have got your own shield and sword, and gods help anyone who thinks they can do a better job. So यहाँ पे if she helps herself, she will get the strength to fight her own battles. बट यहाँ पे अगर completely वो दूसरों पे डिपेंड रहेगी तो ना ही उनको गाली पड़ेगी, बट आपको भी शायद गाली पड़ेगी और आपके सिचुएशन में कुछ आप मिसअंडरस्टूड भी हो जाएंगे, है ना. तो वो चीज़ें हैं. अब हम यहाँ पे ये देखेंगे करियर के लिए गाइडेंस क्या आया था. Yes, take a break. You are on the, high lane. Just जैसे ये लड़की कैसे शीर्षासन में आप आओगे तो आप मूव नहीं कर सकते हो ना. तो उसको भी स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि थमो, थोड़ा सा बी स्टिल, रिलैक्स. ये जो आप घोड़े पे सवार हो ना, घोड़े से थोड़ा सा उतर के आप थोड़ा सा शीर्षासन के मूड में आ जाइए, थोड़ा सा शांत हो जाइए. जब यहाँ पे द ब्लड सर्कुलेशन विल फ्लो, यू विल गेट बेटर आइडियाज व्हाट टू डू विथ योर करियर. यू डोंट हैव टू रश टू गेट थिंग्स, यू हैव टू बी रिलैक्स टू डू द राइट थिंग. और जब आप you are in a rush, you make wrong decisions, you take wrong decisions, and that is not going to help you. So become a hanged man, get into this mode, relax kariye, or this will help you. This position will actually help you take a step back, think clearly over your career, and help you take a better decision, importantly. So this is a guidance for her career. Even in the first reading, I think I remember where I had told ki she is very much on the rush and she needs to slow down a bit as far as her career is concerned. She needs to take it one step at a time. She needs to take it one cup at a time, slow down, think over it, and then move forward. Okay, so that kind of a thing. What else do we have? Now let's come on to Fahmaan. Okay, where we asked Fahmaan, say this was Sumbul's guidance for her career from spirit guides. Okay, now career guidance for Fahmaan from spirit guides, and it is remember to practice self love. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि Fahmaan, देखिए, when you don't have, Fahmaan is not practicing self love. And when you are not practicing, when you don't love yourself, when you are doubting yourself, it means you are doubting yourself. It means you are beating yourself up. It also means that why will you not love something? You don't love something, which means that there is something about it which you don't like. So Fahmaan doesn't like something about himself when it comes to career. He doesn't like that he is not very successful. And this is his own thought process. Okay, I'm not telling anything. So it's like, when it comes to career, he thinks that he doesn't love himself enough because he probably feels that, the success that he should have achieved, he has not achieved this success. So therefore he is not good enough when it comes to career. He is not maybe, talented enough. Maybe, the success that he has got is because of somebody else. He just doesn't give himself enough credit when it comes to his career. There is something that he feels that makes him feel that he is not up to the mark when it comes to his career. Okay? And the universe is telling that you need to love yourself more. When you love yourself more, what are the things you are doing? You are acknowledging a couple of things about yourself, right? And those things are like you are doing your best, right? But because he feels that he has not achieved enough in his career, he feels that he is not good enough. So because he is not good enough, he beats himself up, so he will not accept himself. And then he cannot accept himself, he will not love himself. So all those things keeps on happening in a circle. So his guidance is that, and we always see that Fahmaan is working very, 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 very hard in his career. Have you guys ever thought that why Fahmaan has to work so hard? Like, he is not a newbie. He is already an established actor. He has been in the industry for so long. And I'm not telling that he shouldn't work hard, but the kind of effort, the work that he puts is more like, he wants to prove something. It comes from a place of lack of love for himself.
when you think that yes, you're not good enough, I have to be better, and therefore you beat yourself up, you make yourself slog. You understand that kind of a thing? So what is really happening is that you cannot manifest beautiful things from the place of lack of love for himself, not for anything else, not a lack of talent or anything, but lack of love for yourself, because love is your highest vibrational thing. And when you are in this high vibration zone, you manifest high vibrational things. So you understand how what is basically happening. Lack of love for himself when it comes to career, as in not giving himself proper credit. Just because he doesn't has the numbers, or he doesn't has that many of, or just because it took a long time for him to get successful, or just because he was in a project, working in a project which became successful, but again he is not giving enough credit to himself for that project. So even in this whole Imli serial probably, which was very hit and people like their Jodi, he gives more credit to Sumbul, and he kind of withdraws, kind of just like he withdraws and doesn't take enough credit which he should take. And this is also related with his psyche, which we did in his personality read, jahan pe we have seen that this guy has gone through a lot of emotional losses in his life. And in that video I had explained that this guy has gone through these emotional losses because people have betrayed him in his life, and therefore he does. Betrayed ka matlab kya hua? Something that you deserve, you didn't get. People didn't give you what you deserve. So what happens? There is a limiting belief that I don't deserve it, therefore only people didn't give me. No, I worked hard, I stood for that person, but I didn't got my returns, therefore there is something wrong with me, and therefore I will not love myself. So do you see how all these things become a complex ball? One thought weaves into the another thought, and the another thought weaves into the another fourth thought, and it becomes a jumbled thought. And you kind of start wallowing into that. You kind of start drowning into this. And this is what it is. For Fahmaan to become really successful, all he has to do is that to love himself enough, to give himself enough credit, because he works hard. He knows that. Everybody who sees knows that, can see it, can feel it, that he works hard. Then why not give yourself due credit? Why not love yourself and see yourself as I'm proud of myself, I love myself, I'm a hard worker, I'm talented, I did this. So this guy is kind of always अपने आप को चुराता है, छुपाता है, अपना उसका जितना हक है किसी चीज़ पे ना, वो उतना हक एग्जर्ट नहीं करता है. जैसे कि अगर प्रोजेक्ट भी अगर हिट हुई है तो वो बहुत इजीली वो सुंबुल को सारा क्रेडिट दे देगा. क्यों? क्योंकि उसमें सेल्फ लव नहीं है. यू अंडरस्टैंड? एक हेल्दी सेल्फ लव होना बहुत ज़रूरी है. सो दैट इज़ व्हाट इट इज़. अगर रिलेशनशिप के भी मामले में अगर आप देखो तो दिस गाय इज लिटरली फाइटिंग बैटल्स फॉर दिस गर्ल. This guy is literally fighting battles for this girl, because clearly यहाँ पे guidance आया है, Sumbul, you fight your own battles. You are not fighting your own battles. You are depending on Fahmaan for fighting your battles, and this guy is in turn getting all the gali, right? So Sumbul, you are strong enough. Fight your own battles, girl. तो यहाँ पे इसके battles भी fight कर रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि you know what? I mean, just imagine if you are doing something, you are doing so much for something, some people will kind of really brag about it, no? If you are fighting somebody else's battle and in the process you become the mean person, right? So you see how again this guy gets betrayed, and now somebody will tell that you are making him a hero, but I'm just reading the cards. This is what it is. This is Fahmaan's card. This guy is playing the role of a knight for this lady. This is the card that has come. If you have a problem, if you doubt that, then you can go and check the shots. So this is what it is. Okay. So this guy, when it comes to his career,
He doesn't has to work more hard, guys. He just needs to love himself, accept himself, be in the flow, and he can create magic with his this energy. So this is what it is. जैसे कि if Fahmaan comes for a tarot guidance and he asks me, I want to be more successful, what should you do? What should I do? Should I work more hard? I'm working already 15 hours. Should I start working 16, 17, 18 hours? No, my dear, you don't have to work 16, 17, 18 hours. But you have to bring more self-love into your life. As in, you have to love yourself. You have to give yourself due credit of all the hard work that you do. And when you feel that, yes, I'm a hardworking person, I earn my money because I am successful, because you know how he should start seeing things, that the project is successful, the serial is successful because yes, other people worked hard, but I also worked very hard for it. People are appreciating me, which means that my hard work got noticed. So yes, I have an equal say in the success of this project. So this is a healthy self-love. This is a healthy self-worth. This is a healthy self-respect that you have for yourself. And when you are, vibing and flowing in this beautiful, healthy self-love, your vibrations rise. You are no more beating yourself up. And when your vibrations rise, you start attracting beautiful things waiting for you in your surrounding, in your energetic field. Do you understand how it all works? So yeah. Sometimes you just need to love yourself more than just kind of working hard and slogging, right? Okay. Sumbul ke baare mein, when I asked the spirit guides, dear spirit guides, what is your guidance for Fahmaan when it comes to his relationship with Sumbul? And then the spirit guides, okay, so should we read this one? Let's read this one, 24. Okay, yeah, begin. Remember to practice self-love. You are familiar with concepts of self-love to self-care, but either you have never actively practiced them or they are something you have fallen behind on. Either way, fallen behind on. We just discussed about this, no? That he has gone through a lot of emotional losses, 8 of Cups in his life, and he stopped believing in, his people. Because they betrayed him, because he was standing for them when they needed him, but he never got due credits for it. And this is what happens, when you don't get credits from people, your own psyche starts blaming you that it is your fault. Because every single people you are meeting and you are helping them and they are not helping you back, then what happens? There is something wrong with me. Because everybody is doing the same thing. The pattern is getting repeated. There is something wrong with me. And that is why, okay, there is something wrong with me. Therefore, I am not a good person. Therefore, I shouldn't love myself. And all the same thing goes on. All right, so let's read this. But either you have never actively practiced them or they are something you have fallen behind on. Either way, you should get back on the track. Keep yourself maintained in all ways, big or small. That can mean calling it quits to take luxurious bath instead, or that can mean putting on a rose water face mask and getting out your planner so you can sort out your life before it gets out of control. So yeah, he needs to love himself, pamper himself, give himself more credit for all the beautiful things he does. The way he stands for Sumbul as a warrior, fighting her battles, even when she's not asking for him to fight the battle, but because he knows her in and out. So without any expectation, he's fighting his battles and even getting the brickbats in return. The other thing is, for the working really hard, he's not taking any shortcuts in his life. He is doing the hard work. He is slogging hard. No sugar daddies, so he should be proud of himself that he's not taking shortcuts in career, even if it is taking long time for him to be successful. He should be proud of these things. And when you are proud of these things yourself, it's easy for you to love, right? Okay, so we were talking about this. We talked about
सुम्बुल के बारे में फाहमान को क्या गाइडेंस स्पिरिट गाइड्स दे रहे हैं, और ये है लायनेस, यू हैव अर्नड ऑल योर स्ट्राइप्स, एंड दिस इज अगेन वेरी स्पॉट ऑन गाइज, एंड आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई. यू हैव अर्नड ऑल योर स्ट्राइप्स का मतलब क्या होता है कि जो भी स्ट्रेच मार्क्स आपको आए हैं ना, ऐसे ही नहीं है कि बस ऐसे ही आ गए हैं. व्हेन अ मदर गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड, when she becomes a mother, then she gets these stretch marks, and it's not easy to, and bringing up a child is not everybody can do that. It's like you bring a new life into this world, and that's why it says you have earned your stripe. कहने का मतलब है कि आपने कुछ इतना ग्रेट काम किया है ना कि you deserve it. You deserve it क्योंकि तुमने उसके लिए इतना किया है. So therefore you deserve it. You have earned your stripes. You have earned it. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ऑब्वियसली ये अगेन यहाँ के कार्ड से बहुत मैच कर रहा है. यहाँ पे जब सुम्बुल और फाहमान का गाइडेंस लिया है तो यहाँ पे हमने देखा कि स्पिरिट गाइड्स ने बोला एक सुम्बुल को, सुम्बुल यू फाइट योर ओन बैटल्स, देन ओनली यू विल बिकम स्ट्रांग. इफ यू विल डिपेंड ऑन फाहमान फॉर बाय फाइटिंग योर बैटल्स, यू विल नेवर बी एबल टू ग्रो स्पिरिचुअली, or never be able to learn the soul lessons that you have signed for in this lifetime. So यहाँ पे ये बंदा इसके पूछे बिना ही इसके battles को fight कर दे रहा है. You understand? She is not asking him to fight, but there is a little, but he understands her in and out. So उसको पता है कि she will need me. वो खुद तो कुछ बोलेगी नहीं अपने नीड्स, और वो अपने नीड्स यहाँ पे नहीं बोल रही है, जैसा कि आपको पता है ऑलरेडी. ये उसके पिताजी का कार्ड है. यहाँ पे उसके पिताजी काफ़ी नीडी हो गए हैं. पहले तो वो शुरू में खुद ही कर देती थी, पर अब क्या हो गया कि जैसे बोलते हैं कि उंगली पकड़ के हाथ पकड़ लेना, वो चीज़ हो गई. एंड शी इज़ फीलिंग वेरी एम्प्टी क्योंकि इसके पिताजी से कुछ मिल नहीं रहा है, बस दे रही है. एंड देयरफॉर शी इज़ सिटिंग लाइक दिस. अब ये फाहमान जानता है, ही नोज इट. सो व्हाट हैपेंस इज दैट अब वो जानता है वो पेज ऑफ सोर्ड है, जैसा कि हमने पहले पता किया है. तो ही विल फाइट हर बैटल्स, जैसा कि उसने इंटरव्यू में बिल्कुल उसका बैटल था, पर उसने फाइट ही कर दिया है ना. तो जब तुम किसी के लिए इतना करते हो तब तो तुम अर्न किया है कि तुम उसके साथ जैसे कि फाहमान का हमने देखा है ना, देखो हर चीज़ बहुत ही ब्यूटीफुली एक दूसरे से लिंक होती है. अब यहाँ पे क्या है, वो उसका बैटल तो फाइट कर लेता है, बट फिर अगेन ही हेट्स हिमसेल्फ कि why he has to do this, why he has to tell things against her father, who is he to tell things against her father, and yet he fought the battle for her, right? This girl never came and asked him to fight his battle, but this guy understand this guy in and out, and this girl also we know that she depends on him because उसका guidance ही है कि तुम अपने battles खुद fight करो, तुम उस पर क्यों depend हो रही हो. So internally she seeks his help for her battles. This guy is also the same thing, goes and helps. और यहाँ पे सेल्फ लव नहीं है. तो क्या होता है इसमें बीच की स्टोरी समझिए. यहाँ पे अंडरस्टैंड व्हाट रियली हैपेंस बिटवीन ही फाइटिंग हर बैटल एंड देन लैक ऑफ सेल्फ लव. अब इसने बैटल तो फाइट कर लिया, अब क्या है, अब इसका ब्लेम गेम स्टार्ट होगा खुद पे. लैक ऑफ सेल्फ लव. रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव, यानी कि सेल्फ क्रिटिसिज्म ये ज्यादा प्रैक्टिस करता है. अब यहाँ पे इसका बैटल फाइट कर दिया, सब लोगों ने हल्ला गुल्ला कर दिया, एंड नाउ दिस गाय कम्स इनटू सेल्फ क्रिटिसिज्म. अब जो बोल दिया तो बोल दिया, अब ये अंदर जाके बैठ के व्हाट विल ही डू, ही विल ब्लेम हिमसेल्फ. व्हाई ही हैड टू डू दिस, व्हाई आई हैव टू फाइट हर बैटल्स. बट ये आदत से मजबूर जो होता है इंसान, वो चीजें हैं. तो दिस इज व्हाट इट इज. बट एनीवेज, सुम्बुल के केस में क्या गाइडेंस आया है स्पिरिट गाइड से इस बंदे के लिए, वो ये है, लायनेस, यू हैव अर्न्ड योर स्ट्राइप्स. ऑब्वियसली जब तुम किसी के बिना कुछ बोले, तुम उसके बैटल्स उसके लिए फाइट कर रहे हो, उसके राइट्स के लिए उसको फाइट कर रहे हो, तो क्या तुम क्यों नहीं समझते कि तुम्हारा इतना हक है कि तुम जाके उससे हक से बात करो. पर हमने अभी तुरंत यहाँ पे बताया है कि कैसे वो अपने आप को ना सिकोड़ लेता है. सीरियल के केस में ही अपने आप को उतना क्रेडिट नहीं देता है, मेहनत करता है बट क्रेडिट लगता है कि नो उसका ज़्यादा क्रेडिट है, या फिर he doesn't gives himself enough credit even when he is working hard and the serial is hit, project is hit, he is not giving himself enough credit. क्यों? क्योंकि सेल्फ लव ही नहीं है. किसी का भी कितना केयर कर दो, उसके लिए बैटल्स फाइट कर लो, दुनिया से लड़ लो, लेकिन अगेन he doesn't give himself enough credit.
लैक ऑफ सेल्फ लव। और ये सारा लैक ऑफ सेल्फ लव क्यों आया है? क्योंकि इनकी भी अपनी हीलिंग जर्नी हीलिंग नहीं हुई है। क्योंकि ऐसे लोग फाहमान को मिले हैं लाइफ में जहाँ पे उसको कभी भी जितना भी उसने हेल्प किया लोगों को ना, उसको वापस हेल्प नहीं मिला है। क्योंकि यहाँ पे देखो क्लियरली ही इज समबडी हु इज फाइटिंग battles for others and he's not getting the credit। तो डेफिनेटली लैक ऑफ सेल्फ लव क्यों आएगा किसी बंदे में? आप वो तो सोचो ना। और पर्सनालिटी रीडिंग में आपने देखा होगा कि ये बहुत ही रूखा सूखा सा इंसान है, रूखा सूखा सा इंसान है, बहुत ही रफ टफ है, लोग इसको मिसअंडरस्टैंड डेफिनेटली कर सकते हैं। तो वो चीज़ है, he needs to practice that। तो हम क्या बात कर रहे थे यहाँ पे देखो, तो सुंबुल के केस में क्या चीज़ है? यू हैव अर्नड योर स्ट्राइप्स यार। तुम उसका इतना चिंता करते हो, तुम उसके लिए इतना फाइट करते हो, बैटल्स करते हो, खुद बुरे बन जाते हो। यू शुड अगर तुम इतना किसी का चिंता करते हो और फिर भी तुम इतना झिझकते हो, तो उस रिलेशनशिप का फायदा क्या है? यू अंडरस्टैंड? तो और पर हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि ये क्यों झिझकता है। क्यों? क्योंकि उसके पिताजी हैं, वो उस पर अपना इतना हक नहीं जता सकता है, इवन दो ही केयर्स एंड ऑल दैट। सो या दैट इज व्हाट इट इज। नाउ लेट्स रीड दिस 13 नंबर का कार्ड क्या बता रहा है हमें। 13 नंबर का कार्ड, Lioness. Naturally, sometimes with growth comes in a little scary, little scarring. You have come incredibly far and you should be proud of the person you have become. Think of your scars not as a reminder of the pain you have had to endure in the past, but as a proof that you can survive anything. Isn't that exactly what we talked about in his personality read? This guy has gone through lot of 8 of cups moment, emotional losses, where he has faced lot of things. He has helped people but he has faced betrayals। और यही स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि ठीक है, स्कार्स तुमने जब हम फाइट करते हैं, बचाते हैं किसी को, तो हमको खरोच आ जाती है ना। तुमने किसी को हेल्प किया, तुमको खरोच आई, उसने तुमको बिट्रे कर दिया, खरोच आई। इस खरोच पे फोकस मत करो, अपने बिट्रेयल पे, दुख पे, पेन पे फोकस मत करो। यू हेल्प दैट पर्सन, फील प्राउड ऑफ इट कि इट वॉज यू हु कुड हेल्प दैट पर्सन। यू आर सो पावरफुल। तुम अपने खरोचों को मत देखो, अपने स्ट्रेच मार्क्स को मत देखो कि मैंने फाइट किया तो मुझे कितनी चोटें आई, कितना पेन, दुख, दर्द हुआ, आई एम नॉट गुड, स्ट्रेच मार्क्स आ गया, मैंने तो फाइट किया पर मुझे तो पूरा नोच लिया, खरोच आ गया, क्या हुआ? नो बाबा, तुम फाइट किए, तुमने उसको बचाया, और ये जो खरोच है ना, ये तुम्हारा मेडल है कि तुमने किसी को जाके बचाया है। सो बी प्राउड ऑफ इट। और हमने यहाँ पे यही बात किया है ना कि इसको सेल्फ लव नहीं है, अभी तो एग्जैक्टली यही बात की है। तो डू यू सी कि हाउ द रीडिंग्स आर फोल्डिंग वन इनटू द अदर, इनटू द अदर, इनटू अदर, एंड दैट इज व्हाट प्रूव्स दैट दिस इज अ ऑथेंटिक गाइडेंस। दिस इज नॉट एनी मैनिपुलेशन, दिस इज नॉट इंटेंशनली मेकिंग समबडी अ विलन और मेकिंग समबडी अ हीरो। दिस इज व्हाट इट इज। नहीं तो एक कार्ड दूसरे में इस तरह से घुलेगी मिलेगी नहीं। इवन यू अंडरस्टैंड दैट। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सेल्फ लव करो भाई, तुमने दूसरों को कितना हेल्प किया है। यू हैव अर्नड द राइट नॉट ओनली टू फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ बट ऑल्सो टू अपने रिलेशनशिप पे हक जताओ। माँ बाप अपने बच्चों पे इतना हक क्यों जताते हैं? क्योंकि उसका भरण पोषण हर चीज़ वो करते हैं। माँ बाप तो बच बच के नहीं रहते हैं ना, तो अगर हर रिलेशनशिप में यही होता है। बट यहाँ पे ये केयर तो बहुत कर देता है पर झिझकता है, रिलेशनशिप में उतना हक नहीं जता पाता। बट वॉरियर बन के कुछ तो कर देता है और फिर अपने आप को एक सेल्फ क्रिटिसिज्म में डाल देता है। वो चीज़ है इसकी। So that is what it is. Let's read this. I think we have already read that, no? We'll read this again. Naturally, sometimes with growth comes a little bit of scarring, noj kharoch.
यू हैव कम इनक्रेडिबली फार, तुम बहुत दूर आ गए हो। दूर आ गए हो का क्या मतलब है? बचपन से हमने बात की थी कि ये काफ़ी दिनों से शायद इसने किसी को हेल्प किया होगा इमोशनली और इसको हमेशा बिट्रेयल मिला होगा, बट यू हैव कम अ लॉन्ग फार। तो हमेशा जो बिट्रेयल की जो चीज़ें याद रखता है ना और अपने आप को ब्लेम करता है, नहीं, तुम उसको दूसरे ढंग से देखना स्टार्ट करो, दैट यू आर वेरी पावरफुल पर्सन, दैट यू कैन हेल्प समबडी। ये पर्सपेक्टिव शिफ्ट लाना पड़ेगा तुमको। मे बी ही थिंक्स कि मुझे दूसरों को फ़ायदा करके क्या मिलता है, खरोचें ही मिलती हैं, बट ही डजंट हैज़ टू थिंक दैट वे। ही हैज़ टू थिंक द पर्सपेक्टिव शिफ्ट दैट ही नीड्स टू ब्रिंग इन हिज लाइफ is that in spite of all these things he has helped people, and he can help because only not everybody can help. No, you really have to be having something, you have to be powerful, you have to be something to be able to help people. So in that way you are above the rest or the people you are helping, not as a, so remember the person, the proud, you should be proud of the person you have become. तो यहाँ पे self love issues देख रहे हो ना, self lack of self love, therefore not proud of himself, self beating and all that, not reminder of the pain you have endured, okay, in the past, but as a proof that you can survive anything. This guy has survived a lot. That's just how we talked in his personality read. तो ये चीज़ें हो गई हैं। ये वाला गाइडेंस किसके लिए था मुझे याद नहीं आ रहा है। This was for his career, this was for his for Sumbul, and this was for him. I don't remember for whom. I don't know. You have earned all your stripes. I'm getting a bit confused here. Paint the sun back into your sky tha ya nahi, I don't remember actually. Let me check. Okay, so I think this was not there. These cards were there. So I think this is what it is. I hope you get the clarity for this guidance. Thank you so much for watching.